Hello and a very warm welcome to today's session, which is on dosage forms. Dosage forms, as we all know, it is a unit in PGDPSM program, and I welcome all my students and learners of PGDPSM program for this particular session. I also welcome all the viewers of Gyan Darshan channel because this is a very informative channel, very informative session which will benefit everyone. It is just about the various know-hows of various kinds of dosage forms. So let us begin. In today's session, let us see what are the objectives and what all we are going to cover in this session. We will be defining dose and dosage. What is a dose and what is a dosage? We will also try to understand the classification of dosage forms, like how, on what basis are they classified, whether on the basis of physical forms or on the basis of various routes of administration. Then we will also see and try to identify various categories of dosage forms, like what is a solid dosage form, what is a liquid dosage form, what are its various subcategories. For example, in solid we have tablets, capsules, and in liquid we have various kinds of phasic suspensions, syrups, emulsions. Then we will also see what are the various kinds of parenterals, what do we mean by parenterals, and what are the various semi-solid dosage forms. Also, we will be discussing about the advantages and disadvantages of dosage forms. So let us begin. For example, let us first start with what is a dose. If you see here, a dose is a medicinal preparation or a radiation. It is a fixed amount to which a particular administration is done to a particular person or a patient. So, dose is the amount of a medicinal preparation or a radiation which is to be administered at a given point of time. Then what is dosage? Like in dose, it is the fixed amount, but dosage we have not only the amount, but we have the frequency and the number of times it has to be repeated. So, a dosage is defined as the determination of amount, frequency, and the number of doses of a medicine which is to be given to a particular patient. So, you understand now, a dose is a single unit medicinal preparation or a radiation, for example, and dosage is the entire package, what all the patient has to be given, how frequently he has to be given, and the number of times it has to be repeated. Next, let us see what are the various kinds of dosage forms and how we are categorizing the various kinds of dosage forms. See, there are two ways in which we can categorize the dosage forms. One is on the basis of the physical form, okay, physical appearance, how it looks like. And secondly, on the basis of the route of administration, that is how it will enter the body, through which route it will enter the body. On that basis, we can categorize the dosage forms. So, if we have to see the physical form and if we have to categorize on the basis of the physical form, there are three categories: solid, liquid, and semi-solid dosage form, right? And we are going to see now in detail what are the various kinds of dosages which come under solid, liquid, and semi-solid. So, in solid form, as you understand, is a solid dosage form in which it is mostly taken by the oral route. And you know, it consists of tablets, capsules, which whenever we are ill, we always mostly have a tablet. So, it is a solid dosage form. Then a liquid dosage form, it may be of two varieties, which is monophasic or biphasic. There are two phases. Liquid, it is liquid in nature, and within that liquid you may have some solid particles dispersed in a liquid, or you may have two different kind of liquids, maybe which are either totally
miscible with each other so that we cannot differentiate, or they may be immiscible liquids. Say, for example, their densities are different. Oil in water, water in oil. So, there you will see, as you will keep the dosage, it will divide into two different parts because of the difference in the densities of the two liquids. So, depending upon that, the liquid dosage form may be monophasic or biphasic. Biphasic means two phases, monophasic means one phase. Next is the semi-solid dosage form. Semi-solid dosage form is mostly used in case of external application, that is on the topically, skin, mouth. There, whenever we use such kind of a dosage form is called in the form of semi-solid dosage form. Now, as I said, there is another basis on which we categorize the dosage form, which is on the basis of the route of administration, how the drug is entering into the body. Firstly, as we know, orally, like we can consume the drug, whether it is solid, liquid. For example, here we have solutions, syrups, elixirs, suspensions, emulsions, gels, powders, granules, capsules and tablets. These all can be consumed orally, so they come under the orally administered dosage forms. Then we have parenterals. Parenterals are nothing but they are the injections which may be in solution form or in a suspension or emulsion form. Right, we are going to see what is solution, what is suspension and what is an emulsion. Also, various kinds of implants, because see, parenteral means it is entering the body by a cut or a incision. So any implant also, or any other irrigation or dialysis solution, this is all, it will all come under the parenterals category. Then we have various other routes like rectal route. Through the anus, the drug can also be given through the rectal route, like suppositories are there, various kinds of creams are there when we need to give enema to the patient. Ointments are there, powders and solutions are given through rectal route. So this is the third kind of route of drug administration. Then fourth is topical. Yes, topical. Why? Because your skin also can absorb the drug. How? If we apply some kind of a cream, an ointment, if we have a cut, or if we have any kind of boil, bruise, anything, so the skin can directly absorb the drug from the ointment, cream, a paste, a lotion, or some kind of a solution, or it may be also in the form of a aerosol, a spray. You must have seen sports person, whenever they get some injury, they their medical person just comes and sprays some ointment or some medication to them so that they can get spontaneous relief. This is very beneficial because it consists of very nanoparticles. Any aerosol medicament consists of nanoparticles which immediately enter the affected portion of the body, whether it is a bruise or a swelling. So it gives you immediate relief. So you can see for topical route we have not only ointments, creams, but we also have sprays, gels and various kinds of lotions and solutions. Then fifth route of administration of a drug on which we can categorize is inhalation route, right? Because a drug can also enter directly into your lungs through your nose. When you inhale, when we breathe, maybe it is in the form of aerosols. I think everybody can understand what I'm saying because see, in case of asthmatic patients, we have inhalers wherein a little bit of inhaler directly enters into your lungs and it is nothing but an aerosol preparation. Then nasal route. Nasal route is through your nose, various kinds of nasal drops or sprays. Whenever we feel some blockage in the nose or ENT tube, the entire ENT tube can be corrected through a nasal spray. Another route of administration is through eye. Yes, eye also, eye also absorbs. We have a gland in the lacrimal glands in the eye, corners of the eye. So any solution, eye drops
or any ointments for that matter can enter the body or the affected area through our eyes also. So this is another route of administration. Then ear. So you can understand all our five senses plus skin, naturally the skin comes into it, plus the oral route, anal route, rectal route. These are all various kinds of routes of administration through which the drug can enter the body, and through which, on the basis of which, we can categorize the drug into these different categories. Now, if we have to study in detail what are the solid dosage forms, then we have to understand that there are two main categories of solid dosage forms. That is, one is the tablet. The most common one, tablets, we know, are the most commonly used solid dosage form, and they are they can come in different sizes, shapes, and they vary from few millimeters to a centimeter. You can see here, it is a very colorful picture, and if you see here, this is a package of all the kinds of different kinds of solid dosage forms. Here you can see a capsule, you can see these are coated tablets, and the white ones here are uncoated tablets. So within the tablets also you have different categories. Then here you can see some capsules also. This is another kind of solid dosage form. So these are the various kinds of solid dosage forms. Now, if we have to demarcate again, what are the various kinds of solid dosage forms? We will say they are either coated or uncoated. In uncoated, the tablets, they do not have any coating. You must have seen some tablets have a sugary coating, a thick shell which is sweet and colored, nicely colored, so that it is easy to swallow, and the medicament inside can be concealed properly, and the smell of that medicament is not coming when we are consuming it. So the tablets which do not have any coating, they are known as the uncoated tablets, and they disintegrate very fast when we swallow, because they do not have any coating. Because when we swallow a tablet, it takes time for the coating to dissolve first. In case of uncoated tablet, it doesn't have any coating and it disintegrates very rapidly whenever we swallow it in the stomach itself. What are the examples? Now, examples of these uncoated tablets are, for example, a lozenges tablet. You must have consumed a lozenges tablet, especially when our throat is bad, when we have a sore throat, we want something soothing for the throat. So these tablets, they do not disintegrate, they are not to be consumed with water, rather they are to be dissolved slowly in the mouth to produce the local action on the throat. Then we have solution tablets. These tablets are also uncoated tablets because they are meant to be dissolved in water and then consumed. You can relate to this kind of a tablet. We have some tablets called Disprin, etc. Whenever we have a headache, first the Disprin has to be dissolved in water, then we have to consume it. So there is no coating and it dissolves very fast. Next example of an uncoated tablet is chewable tablets. These are the tablets, as the name suggests, which is to be chewed. Then buccal and sublingual tablets. What are these? These are the tablets which are placed below the tongue in the mouth so that they produce the action spontaneously. They should be able to disintegrate rapidly in the mouth, and from there itself they are directly absorbed without passing through our alimentary canal. So in some cases you must have heard of a medicine or a dose called Sorbitrate, wherein a person needs immediate relief and that tablet is to be placed immediately under the tongue to give a very fast action. So this is an example of a buccal or a sublingual tablet. Then we have implants. These are the implants can be various types, So a tablet implant is placed under the skin, and it is by means of a minor surgical operation so that the medicament is slowly and gradually absorbed
under the skin from the skin itself. Now, these were the examples of uncoated tablets. Now, some examples of coated tablets, let us see. These are coated tablets, as I explained, they are coated, a sugary coating is given and a color is given so that they are easy to swallow, and the medicament inside can be protected for a longer time. Now, the coating which is given is maybe of a polymer or a sugar, as I said. And a sugary coating is normally given wherever we have to mask the taste and odor of the medicament. So, why we have to give the coating? We have understood so that it is protected, the medicament is protected, medicine is protected from the physical and chemical effect of the environment or any other action of sunlight. So, whenever we need that, we have to give a coating to the medicament. Also, it improves the appearance, and as I said, it can mask the unpleasant taste, odor of the medicine. Now, as such, if we see both the kinds of medicines, whether coated, uncoated tablets, have certain advantages and certain disadvantages. Now, we can see what are the advantages of tablets. They are easy to administer. The correct dose is given in the tablet and you just have to swallow that. So, you get the medicine and you get the drug with the right amount of dose. It can be repeated easily and their cost is also low. It is very stable to any kind of physical condition, air pressure, or whenever you are traveling. Mostly the tablets are protected from the physical conditions, ambient physical conditions, and it is convenient to carry. You can just keep it in your bag or pouch wherever you are going. So it is very lightweight, and also it is easy. It can be taken anywhere with a little bit of water. Then there are certain disadvantages of tablets. Like some powders cannot be compressed into a tablet form. So in such cases, how do we consume? We cannot consume the powder as such. It is difficult to swallow the powder. So therein another solid dosage form comes into picture, which is capsules. So the powders which cannot be compressed into tablets, they can be encapsulated in the form of capsules. And another disadvantage of tablets is that very old and very young, like old patients sometimes find it difficult to swallow, and young children also sometimes find it difficult to swallow. So in that case, they prefer syrups, or a capsule for that matter is easy to swallow. Now, capsules is another kind of, the second kind of solid dosage form, wherein the oral medication or the drug is enclosed in a water soluble shell. As if you recall, the capsule has two parts, two shells, and if you just rip it apart, you will see the powdered form of medication inside the capsule. Now, this shell is made up of gelatin, and it is very easy to dissolve the shell. Once we consume it with water, the shell it disintegrates rapidly. Now, capsule is easy to swallow, and capsules are also available in different kinds of sizes. So, if you see a bigger dose, a tablet is much more difficult to swallow than a bigger capsule because it slips easily. And if you see here, the size, as I have mentioned here, the number of capsule sizes ranges from 5, which is smallest, to 000, which is the largest. Now, within the capsule also we have two categories. In tablets we had two categories, coated and uncoated. In capsules also we have two categories, that is hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. In hard gelatin capsules, the capsule shell is hard, okay, and it may be cylindrical in shape. It has a body, a cap. There are two parts of it. You can see the variety of capsules which are shown here in the diagram. These are the two ones which show a different cap and a body. These two, and rest maybe this also has, because of the same color we are not able to see.
and some of them have only single enclosure. So the medicament of these capsules is in the form of powder or maybe granules, and the capsules are sealed after filling. Now, in case of soft gelatin capsules, you can see here, it is a maybe a liquid. The capsule shell is a single unit. Here you do not have two units like a body and a cap in the hard ones. Here there is a single unit, and they are maybe round, oval or pear shaped. And the use of these ones is that they can conceal the medicament which is of semi-solid or liquid in nature. So wherein we find these capsules, you can recall we have seen some multivitamins, we have seen vitamin E for in particular, which is in the liquid form, is always concealed in a soft gelatin capsule shell. So this is the second kind of capsule. And also some liquid medicines which have unpleasant taste or odor, they are very nicely sealed in the soft gelatin capsules. Some ointments that are used in the eye, applicap for example, they can also be sealed in a soft gelatin capsules. Now, advantages of capsules, if we have to see, they can mask the taste and odor of the unpleasant drug. They are slippery and moist. Easily they become can be swallowed. There less additives are required for preparation. For making a tablet, you need something to harden the tablet. You have to add some hardening agents to the powder. But for capsule, you can use the powder as such and put it inside the capsule shell. And a capsule, the biggest advantage is it provides a rapid and uniform release of the medicament in the GI tract. So as you swallow, the effect of the medicine is much faster. Another advantage is that the shell can be colored, it can be made attractive, and it can protect the medicament from air and moisture. Most of the times, the shell is hard enough to protect it from the moisture in the air. The capsule shell is also physiologically inert. Now, what does this mean? That the shell itself, when it absorbs or dissolves in the intestine or the GI tract, it does not produce any effect. It does not give any positive or negative effect. So, it is physiologically inert, it is safe, and we can pack our drug easily. Now, there are three disadvantages of capsules. Firstly, that the drug can absorb moisture. If it is exposed to a very humid environment, then the capsule shell, because it is mostly made of gelatin, it can absorb some moisture from the air and it can spoil the drug. And also, capsules are little expensive than the tablets. So this was about the solid dosage form. Now next is we have liquid dosage form. Liquid dosage form are also broadly classified into two categories, which is monophasic and biphasic. Monophasic, you can understand one phase, mono, one phase, that is, it is a homogeneous mixture of maybe solid, liquid or a gas in a gas in a liquid, okay? And a biphasic means there are two different phases. That is, you can see that maybe it is oil on water or water in oil. So there are two distinct phases. Now there are certain advantages of liquid dosage forms. One is that mostly they are very popular with infants and children and old patients, and the unpleasant taste of the drug can be masked by adding some sweetening and flavoring agents. Also, it is attractive in appearance and it has beneficial psychological effect, and the drug is also readily available for absorption. Certain disadvantages of liquid dosage forms are also there. Like you always need to have a spoon. You need to carry a spoon. You need to carry the bottle, which is little bulky. And there is chances of accidental breakage of the bottle and you can spoil the drug. So liquid dosage forms, actually they have less stability when compared to the solid dosage forms. So whenever we are traveling or whenever we need to keep the medicament for a longer time, it is preferred to have it in the solid form, maybe a tablet or a capsule.
Now let us see what is a monophasic and what are the biphasic liquid dosage forms. As I said, monophasic is the one system, one phase system, and here the two components, that is the solute and the solvent, are there, which are very much blended or they are very much nicely mixed, so it makes a one single component. And the component that gets dissolved in that solute and the medium in which the solute is dissolved is called the solvent. So there is a homogeneous mixing of the medicament. While now various kinds of monophasic liquid dosage forms, if we see here, they are for they are categorized in 4 different categories depending upon its usage. That is, maybe for oral use, maybe for external use, special use, or parenteral use. So oral use, you can read from here, it can be mixtures, elixirs, syrups, linctuses, draughts and drops. External use, that means on the skin, lotions, liniments and colloidins. Special use monophasic liquid dosage forms are like gargles, mouthwashes, throat pains, nasal drops. These are all special use monophasic liquid dosage forms. You can see here there's a long list of eye drops, ear drops, inhalations, aerosols. And for parenteral use, parenterals are injectables. So there is only one category. Now in case of biphasic liquid dosage forms, we have two categories, that is suspension and emulsion. So suspension is a kind of biphasic dosage form in which the finely divided solid particles are dispersed in a liquid. Okay. It consists of two phases, that is a dispersed phase and a continuous phase. And here the medicament is, that is insoluble or poorly soluble, are formulated in suspension form. Excuse me. Suspensions are also classified into 4 groups. That is oral suspension, which is to be consumed orally, parenteral suspension, which is to be administered through injections, ophthalmic suspensions for the eye, and suspensions for external use. Emulsions, on the other hand, is a biphasic liquid dose preparation which consists of 2 immiscible liquids. You can read here. It may be like oil dissolved in water. So you will see the globules of oil dispersed in water, or a water in oil emulsion. So here there are 2 categories of emulsions. Parenterals, as we know, this is kind of injections which are given into the body, and they may be of various types depending upon how they are given, like maybe injected into the skin, under the skin. Accordingly, they are categorized into in different categories like intercutaneous, subcutaneous, intramuscular or intravenous, that is into a muscle or into a vein. So there are different advantages and disadvantages of parenteral. You can read this, like how it is a very fast action. So we need some trained doctor or a nurse to administer it. And the only thing is that whenever we give any medicament through parenteral use, it cannot be reversed. So there are certain essential categories of parenterals, that it has to be sterile, it has to be pyrogen free, it has to be isotonic. So these all are essential things for parenterals which we should know. Then there are some semi-solid dosage forms which are nothing but ointments, and they are mostly applied on the skin. So let us sum up that we have today covered most of the different classes of dosage forms, what are solid, liquid, semi-solid and parenterals, their advantages and disadvantages. So thank you very much, and I would encourage all my learners
Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. जब हम बात करते हैं मानव की और उस मानव को जो परिपूर्ण बनाता है और उसकी परिपूर्णता को जिसमें सभी चीज़ें समाहित होती हैं, ऐसे ही एक पात्र पे आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है राजू। यह जो पात्र है यह मानविनी भवाई की महिला पात्र है। जब हम मानविनी भवाई उपन्यास जो है वह पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में जो नारी पात्र हैं, लगभग इसमें 4 नारी पात्र हैं और उन्हीं 4 नारी पात्रों में हम किस प्रकार से उनके मानवीय भाव को इसमें हम देखेंगे। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी स्त्री के एक ऐसे चरित्र से, एक ऐसे भाव से जिस पे सामान्यतः बहुत कम बात की जाती है। उपन्यासों में एक अगर हम कहते हैं कि उपजमा न्यास यानी कि पास में रखी हुई ऐसी वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द रहती है और हम उसका वर्णन करते हैं। जब हम स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री अपने आप में पूरा एक जिसे हम कहेंगे कि आज तक कई अपने आप में एक पूरा संसार उसके अंदर रचा बसा है। तो आज जिस पात्र की हम बात करने वाले हैं वह है राजू, जो इस उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास की नायिका सामान्यतः जब हम नायिका की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा ही अक्ष आता है कि कोई नायिका है जो
किसी भी जो भी नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, उसमें उसकी मेन भूमिका है, उसे प्रेमिका के रूप में और उसे माता के रूप में भी और उसे पत्नी प्रेयसी के रूप में भी हम देखते हैं। ज़्यादातर जो सबसे जो स्त्री का स्वर्णिम जो माना जाता है कि एक स्त्री का जो है प्रेयसी होना, प्रेमिका, प्रेमिका का एक ऐसा रूप है जिस पर जो सुनते ही व्यक्ति को आह्लादित सा कर देता है, जिसका नाम सुनते ही एक रोमांच सा चेहरे पर आ जाता है और हमें लगता है हाँ, प्रेमिका, पत्नी और प्रेमिका, इसमें क्या अंतर है। इस उपन्यास में वो भाव भी इसमें दिखाया है पन्नालाल पटेल ने कि राजू जो रूपा की बेटी है, रूपा, इसमें बताया है कि रूपा एक सामान्य सी महिला है और उसके साथ में रहती है एक दूसरी महिला माली। माली के 3 पुत्र हैं और खूब अच्छे से अपना वह उसका जो परिवार है वह पूरा समृद्ध परिवार है। ऐसा नहीं है कि माली के घर में कोई दिक्कत परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या का भाव रखती है। रूपा जो है उसके घर में जैसे ही एक लड़के का जन्म होता है, एक पुत्र का जब उसमें जन्म लेता है एक बेटा, तो उसमें क्या है, वो क्या है, उसको ईर्ष्या से वह भर उठती है। हम देखते हैं सामान्यतः कि कई महिलाओं की यह दिखाई है प्रवृत्ति की, महिलाओं की यह प्रवृत्ति भी होती है। वो क्या है, वह दूसरे के सुख को, जहाँ यहाँ पे लेखक ने दिखाया है कि माली जो है उसको खूब अच्छे जो है उसका परिवार है, 3 बेटे हैं और पति भी खूब अच्छा कमाता है, लेकिन उसे रूपा से ईर्ष्या है। जैसे ही उस कालू का जब जन्म होता है तो क्या कहती है कि जब भविष्यवाणी की जाती है कि यह जो लड़का है इसके जीवन में 2 लड़कियां आएंगी, और जब यह भविष्यवाणी जो है जब सुनती है माली तो वह क्रोध से भर जाती है और वह ठान लेती है मन में कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इस जो है इसका तो जो है इसको मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, इसके घर में विध्वंस करवा के ही रहूंगी। कहा जाता है ना कि लड़ाई झगड़े के मूल में अगर हम देखते हैं तो कौन होता है, उसमें क्या है, स्त्रियों की एक प्रवृत्ति जो वर्णन कहानियों में भी, उपन्यासों में भी अगर हम बात करते हैं, महिलाएं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं दिनेश नंदिनी डालमिया की, दिनेश नंदिनी डालमिया को यह अच्छे से पता है कि जिस पुरुष के साथ वह शादी कर रही है वह क्या है, दो नहीं, 3 4 यानी कि कई पत्नियों का पति है। उसके बावजूद भी वह उससे शादी कर रही है। वह कहती है कि यह शादी नहीं, एक समझौता था जो मैंने उनके पैसों के साथ किया, लेकिन मेरे मन में पैसे का लालच नहीं था। वहाँ पर वह वर्णन करती है कि वह मुन्नी की माँ, जिसको उसने कभी देखा नहीं, जिससे वह कभी मिली नहीं, जब उधर से जो है डालमिया जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वह उनकी आवाज़ सुनती है, मुन्नी की माँ की खनकती हुई आवाज़, तो कहती है कि मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को ही क्या है कुछ नुकसान पहुंचाऊं। इसी प्रकार से जो कृष्णा अग्निहोत्री है, वह लगता नहीं है दिल मेरा में लिखती हैं कि मुझे पता है कि जिस पुरुष के साथ मैंने शादी की है उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह अपनी पत्नी सरला से मिलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक जो मेरे मन में जो ईर्ष्या का जो भाव है वह जागृत हो जाता है और उस समय मुझे लगता है कि मैंने यह शादी आखिर की ही क्यों। उसी प्रकार से प्रभा खेतान जो है वह लिखती है अन्या से अनन्या में कि मुझे डॉक्टर साहब की पत्नी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ या जब भी मैं उनसे मिली तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होना, यह कौन सी महिला की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके ऊपर आज तक जो है विशेष जो सिर्फ हम देखते हैं कि लौकिक जगत में जिसके ऊपर बातें होती रहती हैं, लेकिन मूल रूप से जिसके ऊपर बातें बहुत लेख साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रवृत्ति के ऊपर जो है बहुत कम बातें अभी तक की गई हैं। तो ये जो आज का जो पात्र है, आज की जो महिला जो पात्र है वह रूप जो मूल रूप से नायिका है राजू। राजू की जो है वह जैसे ही राजू की सगाई हो जाती है कालू के साथ,
तो जैसे ही माली को पता चलता है कि इसकी सगाई जो है, इसकी शादी राजू से होने वाली है, राजू बहुत अच्छी लड़की है और वह उसको जलन होती है, और वह किसी प्रकार से जो बीच में एक रिश्ता करवाने वाली है, वह कौन है? वह है फूली डोसी। वह भी एक महिला है और वह चाहती है कि इसका घर अच्छे से बसे, और सामान्यतः यही होता भी है कि हमारे समाज में हम कई तरह की प्रवृत्ति की महिलाएं देखते हैं, उसमें से ऐसी भी दयालु, ममतामयी और करुणामयी महिलाएं जो होती हैं, वह क्या है, वह दूसरे के भले के लिए भी काम करती हैं। तो फूला डोसी जो है, वह उसी का प्रतीक यहाँ पर मानवीनी भवई उपन्यास में लेखक ने उसको इसी रूप में उसे दिखाया है। तो वह कहती है कि मेरा जो है, मैं मूल रूप से जो राजू है, वह एक अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी इससे हो, और वह जाके वह रिश्ता तोड़वा देती है। रिश्ता टूटने के बाद जो है, राजू की ज़िंदगी में बिखराव सा आ जाता है। राजू और कालू, कालू जिस उपन्यास का नायक है, राजू और कालू साथ साथ बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। उन्हें उस समय इतना नहीं पता होता है कि उनकी जो है वो है बाद में जाके उनकी शादी होगी या कैसे भी, लेकिन साथ रहते रहते उनको एक लगाव सा हो जाता है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं वह एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, और वो एक दूसरे के बिना शायद नहीं रह पाएंगे। यह जो उपन्यास है मानवीनी भवई, मूल रूप से अकाल पर आधारित एक उपन्यास है। अकाल के कारण किस तरीके से कि जो पहले जो छप्पनिया का अकाल का अगर हम देखते हैं पीछे की, जब हम बात करते हैं तो उसमें पता चलता है कि अकाल के दौरान ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसी के कारण जो है वह कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। इस मूल रूप से लेखक का जो उद्देश्य है वह यही है, एक अकाल के कारण जो है पीड़ित हुए जो परिवार है, उसके बारे में इस उपन्यास में लेखक का बताना मूल उद्देश्य उपन्यास का तो ये है। लेकिन उपन्यास में जो नारी पात्र हैं, उनकी संवेदनाओं को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो नारी का एक अलग ही रूप निकल कर सामने आता है। तो इस जो रूप में हम देखते हैं कि एक और भी लड़की है, भोली, जिसके साथ जो है राजू की शादी हो जाती है। और यह भोली आखिर है कौन? यह जो भोली है, यह जिस घर में राजू की जो शादी होती है, एक दुआजू का तो मतलब यही है कि जिसकी शादी पहले हो चुकी है और किसी कारणवश उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई या कुछ और हो गया, तो उसके बाल बच्चे भी हैं, तो ऐसे लड़के के साथ जो है वह राजू की शादी हो जाती है। और राजू का जो जेठ है, उसकी लड़की से कालू की शादी हो जाती है। यानी कि कालू जो है वह उसकी जेठ की लड़की का पति बनता है। जो दोनों पहले प्रेमी प्रेमिका थे, जिन्हें मरने की कस्में खाते थे, वो क्या है, वो आज एक ऐसे रिश्ते में जो है बंध गए हैं। यहाँ पे दिखाया है कि आखिर प्रेम का रूप क्या है, किस तरीके का जो आज का जो प्रेम है। आज अगर हम बात करते हैं प्रेम की, तो कौन सा, अगर सामान्य से अगर हम देखें, अगर अखबारों में, न्यूज़पेपर में या किसी प्रकार से अगर एक या दो घटनाओं की जब हम चर्चा करते हैं, तो आज का जो प्रेम है वह कौन सा प्रेम है? आज प्रेम किया जाता है और लिव इन में रहते हैं बच्चे, या जो प्रेमी प्रेमिका है, उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी लाशें क्या है, फ्रिजों में मिलती हैं। यह कोई नई कहानी नहीं रही है। अगर हम समाचारों की अगर हम बात करते हैं, ये समाचार जो है ये यथार्थ है। जिस समय का वर्णन या जिस भाव का वर्णन पन्नालाल पटेल ने किया है, वह भाव इससे कहीं ऊंचा भाव है। एक ऐसे भावनात्मक रिश्ते को इस उपन्यास में वर्णित किया है पन्नालाल पटेल ने कि राजू का जो चरित्र है वह इस रूप में निखर के सामने आता है कि वह कई बार जब भोली का और कालू का झगड़ा होता है तो वह सुलह करवाती है। एक प्रत्यक्ष रूप से उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय में एक पुरुष के लिए दो पत्नियां रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कई बार इसमें दिखाया उपन्यास में कि राजू क्या कहता है, कालू क्या कहता है, मेरा मन करता है कि मैं राजू के उसमें राजू की जो है मांग में सिंदूर भर के उसे अपने घर ले आऊं। कई बार जो है, एक बार इसमें वर्णन किया है कि एक बार जो है राजू अपने मायके आई हुई है, तो भोली के साथ उसका झगड़ा हो गया है अपनी पत्नी के साथ। पत्नी को भी उनके विवाह से पहले इस प्रेम प्रसंग का पत्नी को पता है, और वह क्या कहते हैं कि जाओ आप ही इसका खाना दे आओ। तो वह खाना देने के लिए जब जाती है तो कालू कल्पना में डूब जाता है,
और कल्पना में जब इंसान डूब जाता है तो वह चला जाता है ऐसे ऐसे एक जिसे हम कहते हैं पारलौकिक सुख की अनुभूति में वह डूब जाता है। और वह सोचने लगता है कि काश मेरी शादी जो है राजू से हुई होती, राजू इसी प्रकार से मेरे लिए खाना लेकर आती, इसी प्रकार से मेरा जो जीवन है वह किस प्रकार से सुखमय हो जाता। इस तरीके का जो है वह एक रूमानी सा जो माहौल है उसका वर्णन इस उपन्यास में उपन्यासकार ने किया है। और उस समय राजू क्या सोच रही होती है उसका वर्णन भी यहाँ पे किया है कि राजू चाहती है कि वह जो है भोली जो उसके जेठ की बेटी है उसके साथ जो है वह प्रेम के साथ रहे। वह कालू को समझाती है कि तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। तो कहता है कालू राजू से, क्या तुम मुझे भूल सकती हो, क्या तुम मुझे भूल गई हो। वही फिल्मी डायलॉग जिसे हम कहेंगे उस तरीके का जो प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पे पन्नालाल पटेल ने किया है। एकदम से भावुकता से भरा हुआ एक ऐसा दृश्य खींचा है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि स्त्री जो है वह कोमल होती है, भावुक होती है, और उस भावना के चलते वह क्या है एक पुरुष के सानिध्य में जाती है। और उस भावनात्मक रूप को जो है पुरुष किस प्रकार से जिसे हम कहेंगे किस प्रकार से उसका प्रयोग करता है, भावनात्मक रूप को वह किस तरीके से वह लेता है, वह आखिर चाहता क्या है। कई इस उपन्यास में दिखाया है कि कालू को खुद नहीं पता है कि वह कैसा व्यवहार जो है भोली के साथ करे, अपनी पत्नी के साथ वह किस तरीके से रहे। इसी प्रकार का जो उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज के सातवें घोड़े उपन्यास में जब जमुना वापस आती है ससुराल से और वह तन्ना के पास जाती है तो तन्ना से कहती है कि मैं तुमसे आज भी तुमसे प्रेम करती हूँ। कितनी जो है तो तन्ना कहता है कि नहीं, तुम्हें अब यह शोभा नहीं देता है, अब मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता हूँ, तुम किसी और की पत्नी हो। यहाँ दूसरा दृश्य है उसमें क्या है कि राजू मना कर रही है कि तब तुम्हारा हमारे साथ वह संबंध रह ही नहीं सकता है क्योंकि मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ, मेरे अपने कर्तव्य है। बाद में तो जो है राजू जो है वो कुछ समय के बाद वह विधवा हो जाती है। और इसमें दिखाया है अंत में कि किस तरीके से जो उसके पति की मृत्यु के बाद जो है जब उससे मिलता है कालू तो वह किस प्रकार से अंत का जो दृश्य है वह काफ़ी मार्मिक दृश्य है। और अंत में इस उपन्यास में भी जो जाके एक संवेदनात्मक जो है अंत है इस उपन्यास का। तो इस उपन्यास के जो दूसरे जो पात्र हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे जो खतरनाक जिसे खलनायिका भी हम कह सकते हैं वह है माली का चरित्र। माली क्या है, माली को दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता है। वह उनके जो पति हैं वह क्या है वाला पटेल, वो एक अच्छे इंसान है। देखते हैं हम वह क्या है इस उपन्यास में दिखाया है कि किस तरीके से वह उनको गाली गलौज करने लगती है, किस तरीके से वह उनको तरह तरह से वह उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। इसके अलावा वह अपनी बहुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और कोई भी बात आती है तो चीखना चिल्लाना, तरह तरीके का जो है अपना व्यवहार बदल लेना। हम देखते हैं समाज में भी ऐसी महिलाएं होती हैं। और हम उन पर ज़्यादातर जब स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं तो हम स्त्री के सिर्फ उसी पक्ष को देखना चाहते हैं जिसके जो क्या है जो शोषित हुई है, जो वास्तव में पीड़ित है, और हम उसके साथ हमारी पूरी और गहन संवेदनाएं होती हैं। और सही भी है, वास्तव में जो पीड़ित है, वास्तव में जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है उसके प्रति सहानुभूति और उसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं माली, वह एक क्रूर, आज तक जितने भी जो है उपन्यास लिखे गए हैं हमने एक ऐसा क्रूर पात्र नहीं देखा होगा जितनी पात्र क्या है काली है। वो जो माली है, माली से तो किसी का सुख देखा ही नहीं जाता, वह इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं अगर वह किसी को हंसता खेलता और जो है जो अगर खुश देखती है तो। वो इस उपन्यास में जो है माली को जो है आदमी बुरा काम किए बिना, बुरा आदमी क्या है वह बुरा काम किए बिना नहीं रह सकता। जो क्या माली जो है वह हर बार जो है इसी तरीके का व्यवहार करती है और इसी व्यवहार के कारण वह लोग उससे दूर रहते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि कल को मान लीजिए कुछ भी अगर हो जाता है तो क्या है कि इस महिला पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वह श्राप देती है। आप देखना आज एक इस स्त्री के इस रूप की अगर हम बात करते हैं, श्राप देना, गाली गलौज करना, कठोर व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें जो है एक स्त्री के लिए शोभनीय नहीं है। लेकिन हम ऐसी स्त्रियों को भी देखते हैं जो इस कला में
पूरी माहिर होती हैं और वह इस तरीके से अपने आप को बना लेती हैं। वह जो भाव है, एक खलनायिका का भाव, एक ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या क्या है? एक गीली लकड़ी जो सुलगती है, खुद को भी जो है दुख पहुंचाती है और दूसरे व्यक्ति को भी। उसके धुएं से पूरा परिवार जो है, उसकी आंखों में अगर हम ये कहें कि पानी आ जाता है तो गलत नहीं होगा। तो माली का जो चरित्र यहाँ पे पन्नालाल पटेल ने वर्णन किया है, एक ऐसी महिला का चरित्र उनका जो है वह वर्णन किया है जिसे सबसे ही समस्या है, जिसे दूसरे की जो है खुशी देखी ही नहीं जाती है। वह जो है वह अंत तक जो है ये एक इसी प्रकार का व्यवहार करती रहती है। वह अपनी दुष्टता अंत तक नहीं छोड़ती है। तो इस उपन्यास में जो मूल जो नायिका है वह कौन है? राजू। और राजू क्या है? राजू किसी भी तरीके से जो है वह चाहती है कि कालू खुश रहे। अंत में जब अकाल जब पड़ता है और जब अपने ससुराल जब भी जाता है कालू, तो वह राजू से मिलकर आता है। तो राजू से एक तसल्ली सी, वह उसको देखकर उसे तसल्ली सी मिलती है। किसी भी प्रकार, किसी भी बहाने से, किसी भी प्रकार से वह उससे आता जाता रहता है। और इस जो उनका जो यह प्रेम है, ये इस प्रकार से बटा हुआ सा दिखाया है। लेकिन कहीं भी जो है राजू संयमित है। जब व्यक्ति संयमित होता है, मर्यादा में होता है, तब वह दूसरे व्यक्ति के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रभा खेतान वाला प्रेम नहीं है। जो क्या छिन्नमस्ता जो उपन्यास है उसमें क्या लिखती है प्रभा खेतान कि मुझे एकदम से मैं डॉक्टर साहब के बिना रह नहीं सकती थी और मैं जो है रोने लगती हूँ और मैं उनके क्लिनिक में चली जाती हूँ और मैं जब तक उनसे नहीं मिल लेती हूँ या जब तक हम आपस में हम लोग जो है प्रेम नहीं कर लेते हैं, आपस में हम लोग जो है वह जब हम बैठ नहीं लेते हैं हमारे जब एक दूसरे से, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती थी। यानी कि मैं बेकाबू हो जाती हूँ, प्रभा खेतान लिखती हैं। और उन्होंने भी अपने भाव को वर्णित किया है। लेकिन यहाँ पर जो राजू का जो प्रेम है वह संयमित प्रेम है। वह भला चाहती है, एक शुभ यानी कि शुभकामनाएं। हम भले ही हमारी शादी नहीं हुई हो, उसके जो है यहाँ पर जमुना वाला प्रेम भी नहीं है जो ललचाई हुई सी तन्ना के पास जाती है और वह सारी मर्यादाओं को तोड़ देना चाहती है, भूल जाना चाहती है और उस पल को वह जीना चाहती है। लेकिन इसमें ऐसा वाला प्रेम भी नहीं है। इस उपन्यास की जो नायिका है वह एक ऐसी स्त्री को दिखाया है कि जिसे जो मिलता है, जिस तरीके से जो सामाजिक जो दायरा है उसमें रहते हुए वह ऐसा नहीं है कि वह उसे कालू से प्रेम नहीं करती है। लेकिन जब उसकी सगाई टूट जाती है, उसकी शादी दुआजू से हो जाती है, तब भी वह हर समस्या का सामना हंसते हंसते करती है और कहीं भी जो है वह अपने आप को असंयमित नहीं होने देती है, बल्कि उल्टा वह भोली को भी समझाती है। अपना उसका जो दोस्त है, उसकी पत्नी जो है, कालू की जो पत्नी है, वह उसको भी मार्गदर्शित करती है। अगर इस उपन्यास में एक जो तीसरा जो चरित्र जिसका मैंने वर्णन किया है, उसमें क्या है कि वह जो नायिका है वह है माली। और माली का जो दिखाया है कि अंत में जो है माली की बहुत दुर्दशा होती है। अकाल के समय ऐसी मौत उसको दिखाई है लेखक ने कि शायद बुरे कर्मों का जो है परिणाम बुरा ही होता है, वह अच्छा हो ही नहीं सकता है। एक ऐसी महिला जिसने आज जीवन दूसरों का बुरा ही किया, जिसने कभी भलाई करने की सोची ही नहीं, वह इस प्रकार से एक संयमित जो राजू है उसके ऊपर भी लांछन लगाती है। बाद में भी वह उसे परेशान करती सी नजर आती है। वह यह देख ही नहीं सकती है कि कालू को दो महिलाओं का प्रेम कैसे मिल रहा है। वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और किसी की खुशी उससे देखी नहीं जाती है। इस प्रकार से जो है एक माली जो है वह दूसरा जिस महिला फूली डोशी ने जो सगाई करवाई थी उसको भी वह भला बुरा कहती है। और असल में जो है वह किसी भी प्रकार से अगर जब तक उसे चैन नहीं मिलता है, जब तक वह जहर बो नहीं देती है। यानी कि एक ईर्ष्या का भाव, अगर किसी ईर्ष्या से वशीभूत होकर कोई किसी व्यक्ति का कितना बुरा कर सकता है। ईर्ष्या जब प्रज्वलित हो जाती है, एक मन का एक ऐसा भाव है जो इंसान को खुद भी सुख से नहीं रहने देता है, तो वह किस हद तक किसी का बुरा कर सकता है। इसका वर्णन उपन्यासकार ने मानविनी भवाई की जो पात्र है माली, उसके माध्यम से किया है। भली के साथ कालू की जब शादी होती है
तो और एक एक तरफ जो प्रियतमा थी वह पत्नी बनने वाली थी, वह राजू कालू की क्या है चाची सास बन गई। उसे बड़ी सुकून मिलता है कि चलो अच्छा हुआ, बड़ा बढ़िया हो गया, इनका विच्छेद हो गया। और विच्छेद होने के बाद उसे जो सुकून की जो अनुभूति वह कर रही है, उसका वर्णन भी लेखक ने मानवीनी भवई उपन्यास में किया है। वह जैसे ही किसी के यहाँ पर कुछ बुरा होता तो वह भाग के जाती और क्या करती कि वह जो है भाग के जाके उनको बोलती कि अच्छा 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 अच्छा। उसको जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पे कुछ बुरा घटित हो जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं को वह सबसे पहले जाती हैं, और जब जैसे ही कुछ अच्छा होता है तो दूर दूर तक वह दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा वर्णन भी यहाँ पे उपन्यासकार ने किया है कि जैसे ही उसे पता चलता कि किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, वह पूछने के लिए जाती, खूब बैठती, खूब बातें करती। और माली जो है वह अपना मतलब अपने पास से भी उसे अगर कुछ देना होता तो भी वह देने को तत्पर रहती। यानी कि दूसरों के दुख से जो उसे सुकून मिलता, अवर्णनीय जो सुकून है, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। और यह जो प्रवृत्ति है, अगर हम इस पर कटाक्ष अगर हम जो मालती है, प्रेमचंद की मालती क्या है, वह विकास करने वाली है। वह भले ही आधुनिक है लेकिन उसकी जो मानसिकता, उसका सोचने का तरीका है, वह विकास करने वाला है। अगर हम बात करते हैं जंगल के दावेदार के साली पात्र की, तो साली क्या करती है, साली जो है वह एक देशभक्त महिला के रूप में उसे दिखाया गया है कि इसके अंदर ये भाव है। ममतामयी महिलाओं की भी हमने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन यह जो उपन्यास है, इसकी जो पात्र है माली, उसमें ईर्ष्या जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम वर्णित नहीं करते हैं। और वर्णित करने में क्या है, हमें कई तरीकों की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन इस की जो एक तीसरी जो पात्र है भोली, जिसकी तरफ सबसे कम ध्यान गया है हमारा, वह पात्र भी आजीवन मूक रहकर अपने रिश्तों को निभाती है। और कहीं ना कहीं राजू और जो है कालू का पता होने के बावजूद भी वह उस दंश को झेलती है। कोई स्त्री जो है वह उसका पति किसी और से प्यार करता है, शादी के बाद भी किसी और से प्यार करता है, लेकिन वह मूक दर्शक बनी रहती है। कहीं ना कहीं वह उसके मन का जो रोष है उसे भी लेखक ने प्रकट किया है कि वह सब कुछ जानते हुए भी किस तरीके से वह झेल रही है, किस तरीके से वह अपने ही पति के पास जो है पता है कि ये इनको दोनों का ये प्रेमी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो खाना लेके भेजती है। एक ऐसी मार्मिकता का वर्णन भोली के चरित्र के सामने आया है। और कहीं ना कहीं भोली के चरित्र को लेखक ने अंत में एक ऐसा आयाम प्रदान कर दिया कि भावनात्मक स्तर पर हम देखते हैं कि उसका चरित्र हमें कहीं ना कहीं अंत में जाके एक सर्वश्रेष्ठ चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है। वह झेल रही है लेकिन मूक है, कुछ जानती है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। उसके मन का जो अंतर्वेदना का जो सिर्फ अनुभूति का विषय है, उसका वर्णन भी लेखक ने मानवीनी भवई उपन्यास के माध्यम से किया है। तो राजू और माली, फूला डोसी, रूपा, ये जो प्रमुख पात्र थी इस मानवीनी भवई उपन्यास की, कहीं ना कहीं स्त्री चेतना का वर्णन करने वाली पात्र थी। स्त्रियों के जीवन को अभिव्यक्त करने वाली, उनके भावों को लेखक ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ नया आयाम दिया है। और सबसे अगर हम इसमें कहते हैं कि सबसे दयनीय स्थिति इस उपन्यास में एक ऐसी भोली नामक पात्र की है जो कालू की पत्नी है। और अंत में जब राजू और कालू को दिखाया है कि अकाल के कारण जब उनकी मृत्यु होने वाली है तो उससे दूध पीता है और वह जिंदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक नव चेतना का वर्णन उपन्यासकार ने राजू के चरित्र के माध्यम से किया है। तो ये थे मानवीनी भवई उपन्यास के 4 प्रमुख नारी पात्र। In the current global economy and digital era, learn or perish is the order of the day for all adults in all sectors of life. As a result, adult education and lifelong learning have assumed great significance. IGNOU as a national university has played its role by way of coming up with the Master of Arts in Adult Education program, MAAE,
MAE program focuses on different aspects of theory and practice, policies and programs, as well as research, among other things related to adult education. MAE is a 2-year modular program with multiple entry and exit options. Students who complete first year of the program will be awarded with the postgraduate diploma in adult education. In case they want to continue, they will complete second year program and they will be awarded with the Master of Arts in adult education. MAE program consists of 10 courses, 5 courses in each year, 8 theory courses, 6 credits worth, and 1 practical course of 10 credits in the first year and 1 dissertation course of 10 credits in the second year. Practical course of MAE is divided into 3 components, namely community-based practical activities, workshop-based practical activities, and adult education training center or institution-based practical activities. And the student has to complete all the 3 components for completion of this practical course. The minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years. Instructional system follows multimedia approach. The major medium of instruction is self-learning print materials, which is supplemented by other media such as audio video programs, broadcasting, that is interactive radio counseling, teleconferencing, personal contact programs or counseling sessions at the study centers, workshops and field work, as well as internship at the institutional level. Those who seek out a master's degree in adult education have a myriad of career and specialization options. They can go further for higher studies, that is research in various fields of adult education, an adult literacy teacher, faculty in university departments of adult and continuing education, extension and lifelong learning, field functionaries in the project as well as Namaskar, dear viewers. Today I'll be introducing you to the postgraduate certificate program in climate change. Postgraduate certificate in climate change program is offered by School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. This particular program on climate change is the need of the hour. Looking at the gravity of the situation around us, looking at the need of the learners, we have designed this particular program, postgraduate level program. When you look at this particular program, every aspect of climate change is covered in detail, starting from the science of climate change, how climate change can impact on the human beings, for that matter, any living organism, even the systems, urban system or health system, and how about we can address the issue of climate change through mitigation and adaptation strategies, and also how to assess the climate change. If it is happening, how to assess the climate change. And lastly, we have discussed about the interaction between climate change and the society as a whole. So this particular program, if you look at it, it's a very holistic and comprehensive program, and it definitely meets to the needs of the learners.
Having said everything about the program, the basic objective of this particular program is first to expose the learners to the science of climate change. What is exactly happening with the climate system? What are the components of the climate system? That is the first primary objective of this particular program. The second objective is to acquaint the learners with the impacts of climate change. Every sector, primary sector, secondary sector, natural system, and even the infrastructure sector, if you look at it. See, what are the impacts of it? So that will be that is the second objective of this program. The third important objective is to know about the strategies, both the adaptation and mitigation, how best we can combine both strategies together, because we definitely we need to look at the co-benefits. That is the third important objective of this program. And the fourth important objective is to expose the learners so that to capacitate them in the assessment tools, whether it is the remote sensing, GIS, or even the crop models, and in a way what all the possible opportunities are there as far as the remote sensing and GIS is concerned, and how best the students can go for crop modeling, and that we have what you call we have as far as the design is concerned, we have used the locally in fact the free softwares. So in a way the students will be having their own skills developed by looking at this particular course, climate assessment tools. Last objective, as I said, is the interaction that exists between climate change and society. These are the five important objectives of this particular program. And as far as the eligibility is concerned, graduation in any discipline from a recognized university is the basic eligibility criteria, and this is a postgraduate level program and a certificate program, so the minimum duration is 6 months, the maximum is 2 years. And when you look at the fee structure, it is rupees 3,800 rupees you have to pay. And as far as the content is concerned, I'll go about it, but what are the basic thing, what are the things, the basic contour of this particular program I'll be discussing further. Now, very interestingly, if you look at it, when the learners, they will be taking 3 compulsory courses: the climate change, impacts, and the third one is mitigation. It is 3 are basic compulsory courses. And also the students will be given an opportunity to choose either one of the courses, whether it is a climate assessment tools or climate change and society. So 3 are compulsory courses and 1 elective is there for this particular program. Now let us see one by one the courses, what exactly the content is, how best that will be meeting to your needs, and what will be the prospects about it. Well, definitely there are a lot of opportunities are there, because you can understand from what is happening around you, the issue of climate change, how important it is. And presently, if you look at it, everywhere we talk about climate change, and we look at the how best we can adapt ourselves and how to reduce our carbon footprint. These are all the things that is discussed around you. And this particular program covers every detail of climate change, and particularly if you look at it in the present context also, and every country wanted to decarbonize their economy, and they wanted to reduce, as I said, the carbon footprint and other aspects, the how best we can reduce the emission of greenhouse gases. So these are all the things that's happening around us, and definitely there are a lot of opportunities are there for the learners after completing this particular program. Now let us see one by one the courses. The first course is Introduction to Climate Change. I'll just show you that this thing. Okay, the first course is Introduction to Climate Change. When this particular course, if you look at it, has been divided into 4 blocks. It's the normal pattern that we follow, because each and every course, it is having 4 credits. That means the students will be, they have to spend around 120 study hours for completing this particular program, particular course. That is 4 credit course. In this particular course, Introduction to Climate Change, as I said, it talks about the science of climate change. In order to understand much better, the blocks have been designed in a way, systematically and logically it has been arranged. The first block covers with the atmosphere, the climate system,
and what are the different components of climate system, and what kind of interaction that is taking place in the climate system. And when I talk about interaction, I'm talking about the feedbacks. A lot of feedbacks is taking place within the climate system. That is the reason why our planet Earth is livable. The average surface air temperature, if you look at it, is 15 degrees centigrade. Though the concentration of greenhouse gas concentration, it is increasing year after year, still it is definitely we are in a position to live in the environment, and many organisms are living for that matter, because there is a lot of feedbacks are taking place. That's called climate feedbacks. That has been covered in block 1, atmosphere and climate. The second block is a very interesting block that covers about the climatic condition that existed in the past and what is occurring now, the present day climate, and what will be the future climate, kind of the scenarios that will be covered in the second block. It's a very interesting block because we need to understand the climatic condition that was there in the past century, or for that matter in the last millennium or millennium. Because when I talk about it, the climate, if you look at it, the climate of Earth, it is almost it is kind of wavering, kind of some kind of movement is taking place. Nevertheless, that particular thing will be under definitely in a bracket. But now, if you look at the present day climatic condition, that is changing much faster. If you look at it in the last century itself, the temperature of Earth, surface air temperature, has increased to 1 degree centigrade. So the increase in surface air temperature is much faster, and the main reason is the human activities, and they are responsible for this increase in the greenhouse gas concentration. And how, if you look at it, this particular the system that what climate change is taking place, it is anthropogenically induced. That is the reason why we call this present day climate change, or even the last century and this century, we call it as modern climate change, because the prime reason for this is human beings. Human actions are responsible for that thing through many of the economic activities, and that is a very interesting aspect. That is how this the modern climate change is much different from the climate change that has occurred in the past millennium. If you look at it in the geological time scale, many events has taken place, but it has been very gradual. But the present day, if you look at it, is very rapid. That's the most critical, symptom or a critical event that we are witnessing right now. And the third block is very interesting, that because how about because once we measure the climate, the parameters, the meteorological parameters, we can say temperature, precipitation, there are many parameters are there. By measuring those parameters, we will be in a position to decipher exactly what is happening to the climate system. But there are other indicators also, because if you look at the meteorological observations, it is maybe since last century we have the meteorological observations that's taking place across the world. If you look at it, still in some pockets we don't have that meteorological, what you call automatic weather stations and so on and so forth. 2 centuries back we don't have anything. 5 centuries back we don't have any the instrumental records. But how to decipher the climatic condition then? So for that we use a lot of indicators, paleoclimatic indicators. Through that indicators we'll be in a position to decipher the climatic condition that was occurring. So in that way, what happened at the past climatic condition, we will be in a position to figure out, and that is the most important thing, because once we understand the past climatic condition, we will be in a position to manage or address the present day climatic condition. Okay, and that will be covered in the third block, that is the climate change indicators. And the last block in the introduction to climate change course is, we just a kind of a bird's eye view has been given on the policies, climate change policies, what is happening at the global level, at the regional level, or at the nation level. What are the policies? For instance, in our country, we have at the nation level, we have a national action plan on climate change. At the state level also, we have state level action plans. So that will be very well covered in the last block. In addition, because we need to understand the global scenarios also. When you talk about global scenario, we have, because climate change is a global issue, we have global policy, the climate policy to contain the increase in surface air temperature, and we'll be because the agreements, like the latest one is the Paris Agreement, and even we have talked about that what you call that SDG 13 has been covered intensively in this particular last block,
climate change policies. So this is all about the first course, Introduction to Climate Change. Now let us go for the next course, that is Impacts of Climate Change. Impacts of climate change, if you look at the complete design of it, it is very interesting because we have tried to cover as many sectors as possible. Because this particular course, we have 16 units, it covers all the possible sectors. So we have categorized into different sectors like primary sector, natural systems. I'm talking about the natural resources, the urban systems, infrastructure, or resources. So these are all the four important things that has been categorized into four different blocks. So the first block covers about the primary sector. In primary sector, we have extensively covered on the climate change impact on the agriculture, the livestock systems, the fisheries, every organism, because definitely they have a temperature optima, and if there is a change in the temperature, surface temperature or anything, that will have a drastic effect on the living organisms. So the basic thing is the agriculture is a basic thing. The animal husbandry is a very important thing, because and for any developing country, this is all the basic, agriculture is a basic, the driving force for any economy for that matter. So this has been intensively covered in this particular block number one. The second block is just 1 minute. Yeah. The second block is about the natural ecosystems. Very interesting. When you talk about natural ecosystems, the soil as an ecosystem that has been covered, how soil will be impacted by climate change. It's a very interesting thing, because soil is a bedrock for any agriculture production system. How that soil fertility, productivity will be influenced by the changing climatic condition, and what will happen to the living organisms, microorganisms in the soil ecosystem because of climate change, and what kind of dynamics that will be taking place in the soil ecosystem. It's a microcosm, it's ecosystem, soil ecosystem. What kind of interaction, because between the abiotic, that is the soil as a mineral matter, how it will be interacting with your what is it called, the microorganisms. This is every aspect. If you look at it very deeply, it's very interesting thing, and that is definitely a cause of concern indeed, because if something happens in terms of the declining soil productivity or soil fertility, that can have a drastic effect on the agriculture production and consequently on your food security, national food security or household food security. So this is a very typical component that we have covered in the natural ecosystems block. And also if you look at it, other ecosystems like the biodiversity is a very important ecosystem, because if you see the present century, if you look at it, we are in the sixth era of mass extinction. And this mass extinction is driven by climate change, and that is very cause of concern indeed. So this has been covered in the second block. And the third block, if you look at it, is resources. When you talk about resources, energy is an important resource. As I talked about, soil is also an important resource. And when the living organism, because every living organism is providing a lot of services in terms of ecosystem services or functions, so everything will be impacted by climate change. The interesting aspect of as far as resources is concerned, energy we have covered actually very interestingly, because how utilization of energy as a resource, if you look at it, how that will be impacted by climate change. In that case, how best we can switch over from fossil fuels to renewable energy sources, if at all we are switching over, what kind of transition, what kind of investment is required, what kind of investment in terms of technology, finance it's required. So that has been also covered in this particular block. The last block is about the systems. I'm talking about the urban systems, the coastal ecosystems, and also livelihood, because we are dependent on the nature through agriculture or animal husbandry or fisheries as an activity. We are dependent, and in a way this everything is having a forward and backward linkages. If the primary sector is affected, definitely will have a drastic effect on the secondary and the tertiary sector also. So the livelihood security also is impacted by climate change. That has been covered in last block. So this is all about the second course, that is impacts of climate change. The third course is on mitigation and adaptation to climate change.
This is a very important course. Every course is important indeed, but the third important course, that is mitigation and adaptation, is that having said the science of climate change impacts, and the learners will be anxious to know how to mitigate, how to adapt ourselves to the changing climatic condition. So that has been covered in the third course, that is mitigation and adaptation to climate change. When you talk about mitigation and adaptation to climate change, you must understand that the both has to be taken simultaneously. It's not only the mitigation, we need to take both simultaneously, mitigation and adaptation, because the changes that is happening around us is very fast. Because of that thing, we cannot only focus on mitigation, we need to adapt ourselves also. So that is the reason why both has to be taken simultaneously, and our approach also, as far as the strategies are concerned, that will look at both aspects together. So in that way, what happened, will be getting added benefits, we call it as co-benefits. So that is the highlight of the present strategy. And looking at the present strategy, we have designed this particular course, mitigation to adaptation. In this particular course, we have this is again divided into 4 blocks. In the first block, we will be providing you with the conceptual idea about the mitigation, what exactly mitigation is, what is adaptation, what are the strategies, how in order to be successful in implementing those strategies, what kind of finance part, what kind of technology we need, what kind of transition, whether it's an energy transition, what kind of economic transition is required, and what kind of development perspective is required. So everything has been covered in the first block. So it is a very interesting block, because when you talk about, for example, mitigation, we need a lot of resources. Every country has to provide for every country. When I mean to every country, I mean the developed countries, as they have to contribute to the developing countries or low developing countries, because they need the technology, they need finance, climate finance for that, so that they can implement those technologies. Because of the implementation of those technologies, we'll be in a position to minimize the emission of greenhouse gases. So it's a very interesting thing. So it's kind of a global perspective is provided in this first block, block number 1, that deals with the mitigation and adaptation things. The second important thing is that, because having said all the impacts of climate change on 16 sectors we have covered, so in the second block we'll be in fact trying to negotiate, and we'll be trying to put in a very proper perspective to the learners, that how in each and every sector, what kind of strategies can be adopted. For example, for agriculture, we have a lot of strategies. It's coming up. We think about the smart agriculture practices, and whatever the practices we are having, it has to have minimum of emission, minimum of environmental impact. It has to be there, and at the same time, you need to increase the agriculture production also. So that has been covered in the second block, and the same is the case with the energy sector. So much focus will be on the renewable energy, and there are a lot of renewable energies there, and what exactly this, because each and every country, they have their own resources, renewable resources. And for that matter, if you look at it in our country, it's very unique, because we are having almost everything. In fact, solar energy or the wind energy, tidal energy, we're in a position to capitalize as much as possible as far as the renewable energy sector is concerned. So that has been covered in the second block. And the third block, again, we'll be talking about the resilient infrastructure, whether it's a public health system or even the construction in terms of green building, I mean. So everything will be covered in the third and fourth block, each and every sector wise. And particularly, it will be a very interesting aspect, because if you just go through that particular course, the mitigation and adaptation, you will be in a position to understand the strategies. You can fine tune the strategies for your own problem. When I say each and everything will be a location specific. For example, the conditions prevailing in down south will be different, or even a northern condition will be different. Northern India will be different. So in each and every country, it's driven by certain ecosystem perspective will be there. Definitely, for example, in agriculture, the practices will be different, and now the crop is different. So naturally, the agriculture practices also will be different. The same is the case in the down south. And also the same thing, even the transport sector or the energy use sector, everything will be different. So for each and every condition, the strategies will be different. We need to fine tune it. We cannot have a blanket recommendation for that. This is all about the
3 compulsory courses. Now I'll discuss about the optional courses. As far as optional courses is concerned, there are 2 important courses. One is the climate change assessment tools. The one is climate change and society. When you talk about the climate change assessment tools, you'll be exposed to the concept of vulnerability, climate change vulnerability. And what exactly the concept of vulnerability, how the system, whether it's a human system or an agriculture system or for that matter any ecosystem, if it is vulnerable, what is making the system to be vulnerable, and what kind of strategies we can provide so that the vulnerability can be reduced. So that will be covered in this course, climate change assessment tools. That is again divided into 4 important blocks. First block deals with the vulnerability, climate change vulnerability, the conceptual ideas, and also because many nuances are there, because when you wanted to develop, for example, if you say a fishing community, they are vulnerable to climate change, how can you say that thing? So you have to assess. So we need to develop certain indices, and that has also been covered in, with suitable examples have been given in this particular material also, you can go through it. So that is about the climate change assessment tools, block number 1. The second block deals with the, I just talked about the modeling aspect, crop modeling and all, it has been covered. What exactly the model is, what is crop model, what are the different components of crop model, and how, because there are a lot of free softwares are available, that has been covered, and how you can adopt with your own inputs. You have a lot of inputs, and how can you just fine tune the model, and a lot of steps have been there. So that has also been covered in this second block. The third important block deals with your the remote sensing and GIS aspect, because as a tool, remote sensing can be used for climate change management assessment also, it's possible. So that has been covered in the third block. And the fourth block talks about the disaster warning, warning systems is required, and that has been covered in the last block. This is about the climate change assessment tools. Next course is climate change and society. It's a very interesting course, because if you look at it, there's a lot of interaction that is taking place with the climate and the society, because starting from the man, how they have changed the landscape of the earth, a lot of things have happened, and slowly and steadily, because of the transformation, the landscape transformation, and a lot of changes we have caused to the environment around us, the ecosystem we have changed. When I say ecosystem have been changed, I'm talking about the ecosystem imbalances. So because of this thing, many things have happened to the environment, and that is a starting point for our understanding. That is a starting point for to have a perspective, I mean. So we need to understand the interaction that is existing between the climate component and the society. The first important thing is that, so even the traditional, if you look at it, the traditional knowledge will be a, definitely a wonderful resource for adapting ourselves to climate change. When I say traditional knowledge, the climate is changing since the evolution, since the birth of Earth. If you look at it, the climate is changing. So definitely in certain pockets, the traditional knowledge will be there, and that traditional knowledge, people would have used it, and they will, in a better way, they would have adapted to the climate condition. So how best we can utilize those traditional knowledge, and a kind of this particular block, in the first block of the last course, climate change and society, we covered extensively on the pockets, in the global landscape. If you look at it, there are many places, there are a lot of traditional knowledge there. We've given suitable examples so that you can understand that, whether it's a water management, water harvesting techniques, so that have been covered in this in traditional knowledge. And the second block is we have dealt with the, what is it called, very interesting, is the climate, how can it can impact the security aspect, whether it's a human security or a population security, or even the sovereign security of the country that can be influenced by climate change. That has been covered in the second block. And third block talks about the gender issues, how gender mainstreaming is required, and also the non-governmental organizations, and even the
participation is very much important as far as the execution of policies are concerned on climate change. That has been covered in the third and fourth block. And interestingly, last block we have talked about the recent developments in the global landscape. When I say global forum, if you look at it, we are mainly we are driven by the goals, sustainable development goals, that has been covered extensively in the last block. So this is all about the courses in this program, postgraduate certificate in climate change program. To put it in a nutshell, this particular program is a very comprehensive program. In fact, it covers every aspect of climate change. And the third important thing is that it is definitely, it's open to all the graduates, and I sincerely welcome you all for taking admission in this particular program. Thank you very much. Hello viewers, this MA program in Environmental and Occupational Health focuses on the relationship between people and their environment and fosters safe and healthy communities. And this is of utmost importance. This program is an MA in Environmental and Occupational Health. The type of the program is a master's program and the medium of instruction will be in English. The duration of the program will be a minimum of 2 years and a maximum of 4 years. The target group will be a graduation from any discipline. Mainly the professionals working in environmental and occupational sector and non-governmental organizations are welcome to join. Doctors, nurses, paramedical graduates and employees can join the course. Employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of the state and central governments, faculty, researchers and students in universities, research organizations and colleges will find this program very interesting. Graduates aspiring to pursue a career in environmental management, occupational health and safety, industrial health and safety will also find this program of useful relevance. The job opportunities for this program is tremendous. They can work as environmental health and safety specialist, occupational health and safety specialist in various organizations, HSE coordinator and protection officers. They can also work as worksite wellness coordinators, public administration and safety professionals. They can also work as industrial hygienists and ergonomists in the various organizations. Then the safety and environmental health managers, toxicologists, health and safety engineering specializations. ज्ञान दर्शन के स्टूडियो से आप सभी दर्शकों का पत्रकारिता विद्यापीठ की तरफ से, इग्नू की तरफ से और हम दोनों फैकल्टी, मैं डॉक्टर रमेश यादव और हमारे साथ
स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर के.एस. अरुल सेल्वन हैं। हम दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोगों के पास आधे घंटे का समय है, 4:30 से 5 बजे तक, और इस दौरान हम इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ पत्रकारिता विद्यापीठ की तरफ से जो प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे, क्योंकि अभी इग्नू का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है जनवरी 2023 का। तो जो भी छात्र अभी तक एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो ध्यान से हम लोगों के जो जानकारियां हम लोगों की तरफ से शेयर की जाएंगे उसको ध्यान से सुनेंगे, और यदि एडमिशन प्रोसेस में अभी वो इन्वॉल्व हैं या इस प्रक्रिया में इंतज़ार कर रहे हैं कि एडमिशन कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, तो इसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। और जो भी सवाल आपके पास होंगे वो जो हमारे स्टूडियो की तरफ से आपको जो नंबर दिए जा रहे होंगे या डिस्प्ले किए जा रहे होंगे उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हम लोग से बातचीत कर सकते हैं। तो अभी पत्रकारिता विद्यापीठ की तरफ से जो डिप्लोमा प्रोग्राम और डिग्री प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं उनमें से एक जो सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है मास्टर्स में एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये प्रोग्राम हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 3 भाषाओं में उपलब्ध है, और यह ऑनलाइन और ओडीएल दोनों में उपलब्ध है इस समय। तो जो छात्र ऑनलाइन मॉडल में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे वो ऑनलाइन में ले सकते हैं, और जो ओडीएल में लेना चाहते हैं वो ओडीएल में भी ले सकते हैं। ओडीएल और ऑनलाइन में बेसिक फ़र्क मैं बता देता हूं कि जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एडमिशन लेंगे उनका एडमिशन से ले करके और रिजल्ट आउट करने तक ये सारा प्रोसेस ए से ले के जेड तक सब ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। और जो स्टूडेंट, जो छात्र हमारे ओडीएल प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे उनका एडमिशन सबका ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो सारे ऑफलाइन में होंगे। और बीच बीच में इन दोनों में कोई बदलाव होता है तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे वेबसाइट पर सूचित किया जाता है, और वहाँ नोट जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं शेयर किए जाते हैं, तो उसको आपको देखते रहना होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी छात्र के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास 3 नए एमए प्रोग्राम जनवरी 2023 से शुरू हुए हैं, एमए जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एमए जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ये 3 नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं। और एक प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो 3 अभी प्रोग्राम नए शुरू हुए हैं वो अभी इंग्लिश मीडियम में हैं, और इनमें एडमिशन लेने के लिए तीनों प्रोग्राम में जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट लेवल है, और किसी भी एरिया के ग्रेजुएशन हो, किसी भी डिसिप्लिन के आप ग्रेजुएट हों, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है हम लोगों का पीजीजीएमसी, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। यह डिप्लोमा प्रोग्राम हिंदी, इंग्लिश, तमिल तीनों मीडियम में उपलब्ध है, और यह ऑनलाइन और ओडीएल दोनों प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो ये प्रोग्राम हो गया। एक डिप्लोमा प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। यह डिप्लोमा प्रोग्राम जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ है, और ये इसका एडमिशन लाइव है। जो छात्र इस दिशा में या इस प्रोफेशन में मीन्स एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इधर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये 2 प्रोग्राम पहले चल रहे हैं, और एक प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो ये डिप्लोमाज और जो मास्टर्स प्रोग्राम हैं उनका सिर्फ नाम मैंने बताया है। अगले जो हमारे पास समय है उसमें इस प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में हम बताएंगे। मैं अभी इनवाइट करूंगा डायरेक्टर प्रोफेसर के.एस. अरुल सेल्वन जी को, जो स्कूल के जो बेसिक हमारे विज़न है, मिशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और जो हमारा प्रोसेस चल रहा है एडमिशन से ले करके और बाकी प्रोग्राम को ले करके, उसके बारे में एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे प्रोफेसर के.एस. अरुल सेल्वन, डायरेक्टर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़। Thank you, Ramesh. Actually, the university
Indira Gandhi National Open University is known for taking the education to the doorstep. For the people who might have missed the opportunity to pursue higher education, or people might have went to different personal reasons, they might have moved out of the educational options. So for them, those who are able to continue along with the other commitments, as well as those who are working in a different streams in a mid of the career or beginning of the career, wants to enhance their understanding. For them also the program of the university helps a lot. Thirdly, many people might be interested to learn new subjects. They want to explore new ideas, wants to engage with different learning activities. Primarily, these are the potential students comes to our university to take up many academic programs, bachelor's or master's or diploma, whatever level. In that criteria, the School of Journalism and New Media Studies, we have many master's level and diploma level programs. If you are very concerned about understanding a specific area in a short span of time, then you can go for diploma, 1-year diploma in the specific areas. We have the mass communication journalism, very generic diploma, and also as well as we have a specific subject specific diplomas like development communication, digital media, electronic media and advertising, as well as we have a certificate program also. And in case you have time and you want to take a degree based on the specialization, we have 4 different master's level program. Masters in journalism, masters in digital media, masters in development journalism, masters in electronic media. And some of the master's program in our school, you can take up the master's level after 1 year. If you for certain reason unable to pursue that degree, you can leave the first year, you get the diploma as per the new education policy concern. And though this modular exit, lateral entry, lateral exit options are not new to the university, we are practicing for many decades. Almost a large number of programs in the university follows exit and the entry level options. Similarly, if you take a master's in journalism, you have taken admission in master's, after 1 year unable to continue, you can leave with a diploma. After a couple of years, you felt that okay, I have time to continue the master's, you can come back as a lateral entry mode and you can continue the master's level. This is the speciality and beauty of open distance learning. And IGNOU is known for its high quality study materials. Materials are created, produced, constructed with the help of large number of experts. One of the major criticism of our discipline, communication discipline, is a lack of books created in Indian context. We always follow Western materials, Western culture, Western books and all. So in IGNOU, if you look at that, in the master's level program in journalism, we have 16 courses, out of which 12 are theory courses. We have 12 books, ISBN number books, written by eminent scholars and taking Indian examples. And as my colleague was talking about, this program is being offered in multiple languages. See that high quality learning materials available in Hindi. Complete master's degree program available in Hindi and Tamil, along with the English. So this is the motto, or this is the aim of the university, taking the education to the doorstep in multiple method, available technological tools and convenient way, flexibility, exit and entry and everything. So this is one of the special characteristics of the university. Secondly, and the degrees are affordable. It's not very expensive to pursue master's degree program. For example, in our school's newly launched program, Masters in Development Journalism, that we will introduce shortly, and Masters in Digital Media and Journalism, and the fee structure is 5,000 rupees per year. And in the master's level in journalism and all is available in online and ODL mode. In case you wish to take
program in ODL with a soft copy, then still university gives concession as a soft copy material. So that way, the high quality material in an affordable cost. That's a motto of the university. The same line, the school adopted various methods to offer high quality specialized programs, either short term diploma level or long term master's level. So that kind of that kind of approach, we are offering close to 11 programs in the university from the school. In the coming semester, coming July, we are going to launch a bachelor's program in journalism. So this is the overall structure and vision of the school. Now I request my colleague to take one by one the diploma, newly launched diploma programs. धन्यवाद सर. अब एक प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जो से हम लोग 2021 में लॉन्च किए थे. अगर कोई स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट इंटरनेशनल बॉडीज़ में है, अगर उधर जॉब करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई यूनाइटेड नेशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, या फिर आप गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट एजेंसियां हैं वहाँ जाना चाहते हैं, उधर करियर बनाना चाहते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोग्राम हम लोगों के पास एक पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है. और इस प्रोग्राम को बनाते समय हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, सिमका और जो डेवलपमेंट सेक्टर में दूसरी एजेंसियां काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सबके जो कंसर्न है उसको ध्यान में रखे थे. और डेवलपमेंट एरिया के लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए उसको ध्यान में रख करके इस प्रोग्राम को डेवलप किए थे हम लोगों ने. और इस प्रोग्राम को करने से जो स्टूडेंट के बीच में जो स्किल डेवलप होगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च, पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका इवैल्यूएशन, इसमें यही सब बेसिक काम है कि कोई प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो पहले उसका रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई जाती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है उसका मॉनिटरिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट क्या रहा उसका इवैल्यूएशन होता है. तो ये स्किल प्रोग्राम के माध्यम से आपके अंदर डेवलप होता है. अब इस प्रोग्राम को करने के लिए चूँकि अभी हमने पहले भी बताया कि जनवरी सेशन का एडमिशन अभी भी चल रहा है, तो यदि आप डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या उधर अपना रोज़गार तलाशना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है. और इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें जो एडमिशन का जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट लेवल हम लोग रखे हुए हैं. और किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट हो, चाहे आप कम्युनिकेशन में हो, जर्नलिज्म में हो, कॉमर्स में हो, या साइंस में हो, या किसी दूसरे एरिया से आप हों, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. और इस प्रोग्राम का जो अभी इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, लेकिन आगे जा कर के जो सरकार की जो संकल्पना है और विश्वविद्यालय की जो संकल्पना है, और जिसे विश्वविद्यालय ने आत्मसात भी किया, और सबसे पहले अगर कोई विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट किया तो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, और उसके लीडर प्रोफेसर के.एस. अरुल सेल्वन सर हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअल एक इनिशिएटिव लिया कि हम इस प्रोग्राम को, जो एमए जेएमसी प्रोग्राम है, उसको भारतीय भाषाओं में हिंदी के साथ साथ तमिल में इसको लॉन्च करेंगे. और न केवल इन्होंने संकल्प लिया बल्कि इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके और इन्होंने लॉन्च भी किया. तो इस संकल्पना जो सरकार ने कोई कल्पना की, संकल्पना ली और इसको इम्प्लीमेंट किया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म. तो ये अभी हिंदी इंग्लिश में है, और आगे जा कर के भारतीय भाषाओं का जो हम लोगों का कमिटमेंट है उसमें हम लोग इसको ले आएंगे. और लेकिन अगर कोई छात्र ये सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया, लेकिन अगर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क या एग्जामिनेशन क्या कोई दूसरे मीडियम में दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं.
इग्नू इस तरह का आपके लिए फ्लेक्सिबल अवसर देता है कि आप अपने स्क्रिप्ट को, अपने असाइनमेंट को और अपने प्रोजेक्ट वर्क को हिंदी में भी कर सकते हैं। ये सुविधा विश्वविद्यालय देता है। तो आपको ये हिचक नहीं होनी चाहिए कि इंग्लिश में प्रोग्राम है तो क्या हम हिंदी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये डिप्लोमा प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है मिनिमम 1 ईयर का है और मैक्सिमम 3 इयर्स का है। किसी वजह से अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास अगले 2 साल का अवसर है। 2 साल में कभी भी इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका फ़ी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल हम लोगों ने रखा है। जैसे पार्लियामेंट ने जब इग्नू को इस्टेब्लिश किया और जो डिबेट हुआ उसमें ये कहा गया कि इग्नू का जो मिशन है, इग्नू का जो विज़न है और इग्नू का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो रीच टू अनरीच का होगा। तो इस फिलॉसफी के तहत हम लोगों ने, चूँकि राष्ट्रीय स्तर का ये विश्वविद्यालय है और इसका विस्तार, इसका फलक, इसका फैलाव पूरे भारत में है और जो इंडिया की बाउंड्री हम लोग एक बोलते हैं बार बार कि जो हमारी नेशनल बाउंड्री है वही बाउंड्री इग्नू की भी है, बल्कि हम बाउंड्री के बाहर भी हैं। दुनिया के ऐसे कई देशों में हमारे रीजनल सेंटर हैं जहां हम वहाँ भी हैं। अभी 2-3 कंट्री के लिए ई विद्या भारती एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है और गुयाना प्रोजेक्ट है, इसके साथ भी इग्नू एसोसिएटेड है और दुनिया के देश के छात्र भी ओडीएल मॉडल में और आपके ऑनलाइन मॉडल में हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये एक विश्वविद्यालय के लिए बड़ी बात है। और इसका जो कंटेंट मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, वो पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का डिजिटल भी अवेलेबल है और प्रिंटेड मटेरियल भी अवेलेबल है। आप जिसमें सूटेबल हो, जो आपके लिए सूटेबल हो या जो आपके लिए कंफर्ट हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। ये दोनों अवसर विश्वविद्यालय देता है। तो बेसिक तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है। मैं डायरेक्टर के.एस. अरुल सेल्वन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, उसके बारे में बताएं सर। Thank you. In the line with specialization, actually the school initially started with a broader approach of offering diploma in masters in mass communication. That was the initial approach. We have launched it and we have reached out to larger number of audience, students. The second step, we started offering specialized areas like development journalism, development communication, digital media, electronic media, advertising. These are specialized areas, and some of those areas we have converted to master's level and some of them are available in diploma level. And as mentioned by my colleague, university has a standard approach. The education should not be, the medium of instruction should not be a barrier for the right candidate. Even our programs are in English in nature, development, communication or digital media. The university's standard policy of bilingual approach to the academic programs, like students, even if they enroll for English medium of instruction, assignments, projects, exams, you can give in either in English or in Hindi. Though material may be in English, but you are allowed to appear for all the internal and external exams and assignments in a bilingual approach. You can't mix the language, but you can choose any one other language. This is basically to reduce a barrier, to enhance, motivate the students to complete the program as per the desired language. So that I want to expand that idea. And this is the second specialization program we want to introduce in this program, postgraduate diploma in digital media. And mass communication, very generic in nature, where we learn about all the medium, radio, television, film, newspaper, photography, everything. And we are again learning everything in digital media, but here the platform is simple, single platform, but we are integrating all the media element. So for example, in a digital journalism, the stories, news stories can be written in a text along with the pictures, along with a video, or can be a photo feature along with a audio. It can be slideshow or it can be infographics.
So this is the difference between mass communication. Mass communication, we are dealing with everything independently. Radio, we need a radio recording studio. We have TV sets to watch that. Film, different level. Newspaper, you want the newsprint and all. But in online, everything is happening. We have text, we have audio, we have video, we have graphics, we have multimedia content. But everything in your in your mobile, everything in your computer, everything in your tab. This is the one, and this is the one aspect of the medium of communication. But communication technology has its own applications. It can be applied in education, can be applied in health, can be applied in environment awareness, can be applied in governance and service sector, and many more areas. The technology, there is no sector we can say where there is no application of technology. And each individuals are connected with the different technological applications, being it a booking a cab or attending a classroom or taking exams online, various applications. And this particular diploma handles all these dimensions. Remember that writing, conceiving an idea and converting into either text format or multiple media format, this looks like a simple. But when you come to the table, start thinking about an idea and converting into different media platform, it's a challenge. And you are not writing for yourself, you are writing for somebody else. And what you are thinking needs to be translated into others' mindset. So this is the crux of communication, and this is what we are incorporated either in all the specialized area or generic masters and diploma and all. And specific to the platform specific, we are fine tuning the ideas into either digital platform or electronic media or advertising. So in the digital media program, we have specialized courses deals with the journalism, writing, editing for online platform, and understanding this medium and different from the different cultural social perspective. And secondly, this medium is having plenty of information, big data, how to extract the data, how to manage the data, how to present the data in a simpler format. So journalism is one example, another one is the researches, along with that understanding the medium. So these are three main concept of this diploma, and the university always makes the program reachable to larger sections. So our eligibility is common, simple, a bachelor degree from any discipline, and you can complete the program within a year or within 3 years time, flexibility. And you can appear the exam in either in English or in Hindi, and exam, and particularly these two diploma program, development communication and digital media, are available in a distance mode as well as in online mode. And online mode, as my colleague was talking about, from the application to the result, everything you can do it through computer from your mobile. Log in and check the LMS, materials are available, upload the assignments, you can track the assignments, and once announcement evaluated, you get to know that how many assignments are evaluated, how many not evaluated. You can contact the concerned counselors and get it clarified, and everything online, everything it's in your, you can monitor that, and exam and projects, counseling, viva, everything through online. Or you want to do it in a distance mode, that also you can do it. So these are the two diploma program, and we have two more diplomas like the electronic media and advertising. Briefly, we will touch that. I think I request my colleague to touch about those other two diplomas. जी, अब हम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट का समय है सर। तो हमारे पास जो शुरू में हमने बताया कि स्कूल की तरफ से जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें MA JMC, उसके बाद MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, MA जर्नलिज्म इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MA जर्नलिज्म इन डिजिटल मीडिया, ये प्रोग्राम MA मास्टर प्रोग्राम है। और डिप्लोमा में PG डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, ये हमारे प्रोग्राम अभी डिप्लोमा और मास्टर्स प्रोग्राम है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, कोर्स है, उसको आप कर सकते हैं। और ये सारे प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए
यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप इग्नू की वेबसाइट पे विजिट कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ देखिए और आइए इग्नू में एडमिशन लीजिए। जनवरी का एडमिशन अभी चल रहा है और ये प्रोग्राम्स वैसे प्रोग्राम हैं जो आपको करियर में हेल्प करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं और ये ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशनों से बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। आज का समय अब समाप्त हो रहा है। आगे फिर हम लोग इस प्रोग्राम से संबंधित जो भी जानकारी होगी नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का समय यहाँ समाप्त हो रहा है। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।